thing which every individual should know, that prevention is better than cure, and if you are infected, a better treatment can get you out of that mess. Thank you. Thank you very much. Our chief guest, Mr. Osama Kabbins, is now address our gathering. For inviting me in my capacity as UNAIDS country director for India. Special thanks to Dr. Manya and the organizing committee. HIV/AIDS response globally in India. By first noting that, despite the incredible momentum we have seen, particularly in countries that previously been undergoing generalized epidemics and reductions in rates of infections by the global community of zero infection, zero AIDS-related death, and discrimination. Yet still, there is concern that after 3 decades, that the sometimes competing global developments, economic issues, environmental issues, health, and political agendas. Of course, the private sector, government, and other partners can the solutions required in the partnership around AIDS be successful. In India, response with, I would say, some of you have been there from the beginning, more than 25 years of response. And by the late 90s and early 2000s, transgender populations and communities in India. So based on successful early projects that have been put in place in places like Manipur, Mumbai, and Chennai, and other localities, an intervention-prevention package was defined and replicated at a considerable scale. Underlying that prevention package has been risk reduction and harm reduction, safe sex and safe injecting practices. Systematically, the government with the community partners and the civil society partners have expanded through the National AIDS Program during the 2000s, the 3rd program, the 4th program, the 5-year cycles, to almost 35. UNAIDS, the World Health Organization, other partners with the Ministry of Health and Family Welfare. All of this has been accompanied by an international support to India in different ways. I don't want to mention it because it goes for many years, and it has been in terms of funds. But I think what I need to align is that India is moving, broadly speaking, into domestic funding on the AIDS response, and in the latter partnership, in terms of researchers, civil society, this can be maximized in a platform where India and beyond researchers can play a key role and advance the HIV epidemic. A long-term response also requires looking at how to sustain services. So how to integrate the existing treatment services, how prevention projects can be integrated on long-term prevention. Thanks to Dr. Anil Kapoor for blessing the occasion. Special thanks to our chief guest. Vivek sir here. All of you, man. Vivek sir. Vivek sir, center. Center here. Vivek here. Vivek sir. And the goal what we have in year 15 million people will have HIV therapy. I think that's coming very close to be achieved. Now, awareness is a very, very important thing, and social acceptance is also a major issue in HIV. I'm very happy to have celebrities here, Vivek, Oberoi, and Rati ji, who are volunteered, and they have been working for this cause for a long time. He is also here, Dr. Rivari, we are behind this congress. So thank you very much. I think, how do we progress? I think there are questions or any other questions? I think Dr. Rivari from the National Health Control, which are free of charge, including investigation, and in the private sector, if somebody is affording and have a kind of a confidentiality issue involved,
we are now looking at this Congress for aim of how to have a minimum drug, minimum side effect, low cost. 57% reduction in new infections. That has been an achievement which has been acknowledged globally by all agencies, and it is a claim which has been verified by scientists across that the number of new infections has come. To say something more, what is your feeling about people living with HIV? How do you look at it? Sorry. Dr. you say that. Sorry, sir. Sorry, madam. Please. Good afternoon, everybody. Yes, to the question, my association has been a little over 8 years probably. I thank Mr. Anil Khan especially for making me much more aware as a human being, as a person, and the awareness to the cause, which is, I think, utmost. I have seen the changes. The first association was in Nagpur for the TAL clinic, the opening in Nagpur, and yes, there was a lot of ostracization at that point. I saw it from a layman's point of view at that point, since it was my initial time associated. I was apprehensive, but I wanted to be for the people, with the people, and for the cause, and for my own self also to grow. I needed to grow more as a human being and be there in all my capacity, not just an achiever as an actor, but a large social awareness which I needed to put those few first steps forward. Yes, it was a little trying at that point, but today, as I see it, I have been witness to some extremely positive moments. We recently, on the 23rd of January this year, we were together with Arunji and the TAL clinic in Pune. And I saw the growth, I saw the warmth, I saw the positivity, and I saw not just the HIV affected people, but even normal people all coming together under one roof. And we had some lovely moments. There was a lot of performances, there was happiness, there was a lot of cheer, and I also realized there's a lot of more, the subsidies have come down, the prices have come down, where the awareness has come down. A lot of growth has been, and I see it, I see myself and I see the whole journey going to be a very fruitful and a very, very nice, it is going to be very nice in the future, I think so. Vivek ji, you would like to say your just upcoming on the whole issue? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि HIV एक ऐसी बीमारी, ऐसे एपिडेमिक है जो सिर्फ विक्टिम को नहीं अफेक्ट करती है, बल्कि उसके पूरे परिवार को, परिवार की सामाजिक जो स्टैंडिंग है उसमें भी बहुत इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ता है। और जिस एक ज़माने में जहाँ महात्मा गांधी जी ने हरिजनों के लिए जिस तरह से आवाज़ उठाई थी और एक सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा की, उसी तरह आज जो लोग इस मंच पर प्रस्तुत हैं और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो HIV पेशेंट्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अवेयरनेस दोनों तरफ है। एक तो प्रिकॉशनरी अवेयरनेस होता है कि आप HIV से बचाव कैसे कर सकते हैं, सेफ सेक्स हो या डिफरेंट थिंग्स लाइक दैट, उसके बारे में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो HIV पेशेंट्स हैं, समाज में उन्हें कैसे एक्सेप्टेंस देना है, स्टिग्मेटाइजेशन जो हो जाता है समाज में जैसे रति आंटी कह रही थी कि ऑस्ट्रेसाइजेशन जो होता है, HIV पेशेंट को हम जिस निगाह से देखते हैं, हम डायबिटीज़ के पेशेंट को ऐसे क्यों नहीं देखते? वो भी पेशेंट है, ये भी पेशेंट है। तो मुझे लगता है कि उस तरह का एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। मैं दाद देना चाहूँगा जिस तरह से काम गवर्नमेंट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, पूरे हेल्थ प्रैक्टिशनर्स कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में खन्ना अंकल ने मुझे यहाँ बुलाया है। एमक्योर इनकी कंपनी है और इनके साथ में बहुत सारी फार्मा लॉबीज़ की, मैं हिंदुस्तानी फार्मा लॉबी की खासकर दाद देना चाहूँगा कि शेर बनकर उन्होंने विदेशी कमर्शियल प्रेशर्स के सामने दहाड़कर अपने हिसाब से दे मेड नेसेसरी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो HIV पेशेंट्स के लिए एक ज़माने में $10,000 साल का खर्चा होता था,
हिंदुस्तानी के लिए $10,000 का खर्चा साल का सिर्फ जीने के लिए, बचने के लिए, आप सोचिए, उसे इन लोगों ने $100 के पर ईयर के रेट पे लेके आए हैं। इस बात की हमको बहुत दाद देनी चाहिए, थैंक्स टू द फार्मा कंपनीज ऑफ इंडिया स्पेशली, कि लाखों लोगों की जिंदगियां बच गई, उनको जीने का एक मौका मिला। बतौर एक सेलिब्रिटी मैं सोशल कॉजेज से हमेशा जुड़ता आ रहा हूँ। कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन से 12 साल से जुड़े हुए हैं और 2.5 लाख बच्चों की हमने जाने बचाने की कोशिश की है पिछले 12 साल में। इसी तरह अगर मेरी कोई सेवा मेरे लायक कोई सेवा हो, मैं आगे आऊँगा और HIV के लिए भी जितनी प्रयास कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, उसके लिए मैं तैयार हूँ। Dr. Sunawat, you want to say something? This sounds very important information we can make. Is it the rockets that we can send? It is the health and education of the public. Absolutely, sir. That is the yardstick by which we measure the country progress. And in health, it is very important because 100 years back, a human life was 50 years, 60 years. And if they lived to 70, it was considered a very, very good old age. Now the life expectancy is 80 and 90. So whatever 20, 30 years God is giving us, let that be very healthy. So this is the message I would like to give the media, that let the country progress by educating the public and by providing fantastic health, so that right to old age we will have very few, say, debilitated people. Thank you. Thank you. मैंने सिर्फ अपनी सर्विसेज ऑफर की हैं अभी तो मैं जुड़ा नहीं हूँ इस कॉज से, बट आई थिंक जितनी अवेयरनेस की जाए उससे, जैसे मैंने कहा कि 2 चीज़ें हैं, एक प्रिवेंशन एंड दूसरा एक सोशल एक्सेप्टेंस। इन दोनों चीज़ों में अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। मुझे अच्छी तरह याद है जब शबाना मैम ने एक एड्स पेशेंट, एक बच्चे को गले लगाया था नेशनल टेलीविज़न पर, उससे बहुत लोगों पर प्रभाव पड़ा कि एड्स छूने से नहीं फैलता। ये जो कैंपेन का मैसेज था, इस मैसेज ने बहुत इम्पैक्ट जनरेट किया। तो मुझे लगता है कि ऐसे मैसेजेस अभी भी ज़रूरी हैं, क्योंकि शायद अर्बन सिटीज़ में, मेट्रोज़ में अब लोग एक्सेप्ट करने लग गए हैं, लेकिन HIV का जो स्टिग्मा है, HIV की जो एक नेगेटिव इमेज है, वो अभी भी गांव-गांव में बहुत ज़्यादा है। एंड एक इंसान, एक सोसाइटी मेरे हिसाब से तब प्रोग्रेसिव और डेवलपिंग मानी जाएगी, एक कल्चर तब प्रोग्रेसिव और डेवलपिंग माने जाएगा जब किसी भी विक्टिम की सोसाइटी हेल्प करे, ना कि उसे और दबाए और उसकी ज़िंदगी में और तनाव पैदा करे। मेरे ख्याल से अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि मेरा तो एक्सीडेंटल अवेयरनेस हुआ था 8 साल पहले, जब मैं अरुण जी के यहाँ नागपुर में गई थी। तब से लेके मेरी ख्वाहिश थी टू कंटिन्यू बीइंग अ सोशली अवेयर सिटीजन। AIDS, HIV is just one aspect of me being a socially aware citizen. बहुत सारे causes हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं on a day-to-day life which one should be aware. So yes, I am very connected with it for sure. Vivek, इस तरह से awareness की activity की जाती है, कुछ समय तक इसका impact रहता है, and after that लोग अपनी life में busy हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसका सही में impact रहे, इसके लिए आपको लगता है कि किस तरह के कदम उठा सकते हैं? मुझे लगता है कि किसी भी कॉज के लिए, जब मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंटी टबैको अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहा था, तो हमें कंटिन्यूसली एक कैंपेन जारी करना पड़ा जहाँ पे हम यूथ से जो सिगरेट स्मोकिंग की या तंबाकू के सेवन की आदत पिकअप कर रहे थे, उस टाइम पर वहाँ पे इंटरवेंशन क्रिएट करना था थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स। तो हमने टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग की, हमने थिएटर्स में इसको दिखाया, हमने यूथ के लिए कॉलेजेस में, यूथ हब्स में प्रोग्राम्स किए, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा। A lot of the youngsters started realizing that, in fact, जो हमारा अगला कैंपेन होने वाला है, जो इस साल हम जिसे न्यू फाइनेंशियल ईयर में रिलीज़ करने वाले हैं,
वो campaign is also going to be that smoking does not make you macho. You know, in fact, जो अब नया research बता रहा है कि men in 1 in 3 men suffering from sexual health disorders because of smoking. तो जब हम इन चीज़ों का प्रचार करने लगेंगे तो स्मोकर्स को या तंबाकू के सेवन करने वालों को देखने का नज़रिया अलग हो जाएगा. इसी तरह आई थिंक HIV के कैंपेन्स को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूसली उसका प्रचार करना बहुत ज़रूरी है. जितना हम प्रचार करते जाएंगे उसी तरह, जैसे हमने अभी पोलियो को इरेडिकेट किया है, इसी तरह हमारा विजन होना चाहिए कि HIV को भी हम इरेडिकेट कर दें. अभी डॉक्टर सुनावाला बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि साइंटिफिकली इवेंचुअली तो इट शुड बिकम लाइक HIV, इट शुड हैव अ वैक्सीन एंड जस्ट वाइप इट आउट कंप्लीटली. और किसी ने और बहुत खूबसूरत बात कही कि HIV जैसी बीमारियां हमारे खून में, हमारे नसों में नहीं होनी चाहिए, हिस्ट्री की किताबों में होनी चाहिए बस. तो यही मेरी शुभेच्छाएं हैं हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए. इस वजह से आपको लगता है कि जानना चाहूँ कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा HIV बढ़ रही है? I think Dr. Manyar will be able to answer this. One thing which is very sure, that it's a behavior problem. Okay, would we be able to eradicate HIV? I'm not very sure yet, doubtful about it, because nobody can change the behavior overnight. And even if you look at the developed world, if you look at our own world, this disease will continue to remain. We need to make sure we fight it out. We get treated, as Vivek ji said, like diabetes, like blood pressure, which is one of the commonest thing in our country. Let's look at the HIV as the treatable disease without much of the discrimination. Lots of problems. There are several people I see in my private sector where people are just not willing to come forward, like, say, Vivek ji came here to help us out, to create awareness, right? But none of my patients are willing to come on the stage and say, look, I'm XYZ, and I'm an HIV, I come from it's no more a disease of poor or uneducated people or certain religion. It's there in all the state of the society. And I'm sure, Vivek ji, your presence, Rati ji's presence, would make sure people say, look, people are accepting society. Now, it took so many years. Dr. Rewari is now worried now, more than 25 years gone, we are still seeing unacceptability. Gradually reducing, but it's there. I mean, no doubt about it. I wouldn't say I'm positive. It's very difficult. Because your reaction, the reaction of my colleagues here, would be something which I don't want to face. Vivek, Bollywood industry बहुत सारी टॉपिक्स पे फिल्म बनाती है, लेकिन नॉर्मली HIV जो है ना, वो फिल्मों के पहले बस 1-2 मिनट के लिए दिखाया जाता है. आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में कोई फिल्म बनी थी अवेयरनेस को और बढ़ाने के लिए? एक बहुत अच्छी फिल्म हाँ, रेवती ने बनाई थी. रेवती, शिल्पा, they had done a film. फिर मिलेंगे. They had done that film, and I think अभी एक फिल्म बनी थी Dallas Buyers Club, जो ऑस्कर अवार्ड जीती है, an AIDS patient portrayal by a superstar Matthew McConaughey just won an Academy Award. He won the Oscar Award for his performance. So here I think there is going on. Alright, I'm going to have to leave, ladies and gentlemen. Thank you so much. Please. Okay, Vivek has to leave. I'll save him the embarrassment. Vivek,